Hello everyone, I'm your teacher Namita Banerjee. So, first of all, I'm really very sorry that I was unable to upload video since long time, and that's why I'm not going to waste any further time from now onwards, and I will try to upload the videos as soon as possible. So, without wasting any further time, let's get started. But before that, welcome to the channel MB Classes, your learning hub. So in this video, we are going to cover the first chapter, that is reproduction in animal. This is belongs to class 12 biology book, and in this first part, we are going to cover the topics that are. So in this video, we are going to cover the topic that is lifespan, reproduction, and types of reproduction, right? So first of all, lifespan. Now, the period from birth to natural death of an organism represent its lifespan. Okay, so basically there are many kind of death like disease death and accidental death, suicide. So basically they are not considered in lifespan. So the period from birth to natural death represents its lifespan. Okay, so here are some example. The lifespan of a butterfly is about 1 to 2 weeks. Then crow is about 15 years. Then parrot is about 140 years. A tortoise lifespan is about 100 to 150 years. Then lifespan of a crocodile is 60 years. Now, reproduction. So, reproduction is defined as a biological process in which an organisms give rise to the young one of its own kind. Okay, so the offsprings grow, mature, and capable to reproduce their young ones, right? Hence it is a continuous process. So basically reproduction is a process through which an organism is able to give a birth to their young one, and because it is a continuous process. Why? Because their next generation will further grow, mature, and capable to reproduce, and then the process hence always continues. Okay, so then the next one is factors that affects reproduction are habitat, internal physiology, food, and so on. Now, types of reproduction. Basically, there are two types of reproduction. First is asexual reproduction, then sexual reproduction. Now, the asexual reproduction is further bifurcated into two parts, that is microorganism and plants, and in sexual, human as well as animals, right? Now, asexual reproduction. The organism that are capable of producing their offspring by themselves. Okay, so here is the keyword themselves, which symbolizes that they do not need any other partner for their reproduction process. So basically asexual means, a means single, or alone. Okay, so A means single and sexual reproduction means the process to reproduce, right? So in the asexual reproduction, basically the organism is single celled and they reproduce their young ones, and because they are only partner of themselves, or you can say they are the mother. Okay, so they don't need any father. That's why the genetic material have
no variety. That's why the offsprings are exact copies of them, or you can say that they are the clone of their parents or mother cell, right? Now, hence they are the clone, as I said. Now, asexual reproduction is common among single celled organisms, as I already told you, and in plants and animals with relatively simple organizations. Now, in protists and monerans, the organisms of the parent cell divide into two parts that give rise to new individual, right? Thus, in these organisms, cell division is also a mode of reproduction. Okay, so I will draw T. For example, it is a single celled organism, and then it will divide into two parts. Okay, then the further two part is divided into two different individual with separate nucleus. They are the daughter cell, okay, and this is the mother cell. Now, following are the different modes of asexual reproduction. First is binary fission. So, what is binary fission? Where single-celled organisms divided into two equal halves, as I already shown you. Like in binary fission, the mother cell will divide into two equal halves. No differentiation. Okay. The cells mature and able to reproduce again into two equal halves, and the examples of binary fission is amoeba and paramecium. Excuse me, please. Then the second one is budding. Budding in yeast and hydra. The division of unequal and small buds produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually get separated and mature into new yeast organism. For example, in this part, first one is mother cell, which divided into two equal halves. Then in budding, this is the mother cell. Then it will have the outgrowth, which is unequal, okay, unequal daughter cell. Then this unequal daughter cell will remain attached to its mother cell until and unless it get fully growth and maturity level. Then after it get properly matured, it leaves or detaches from its mother cell and leave its own, where it can able to give birth to its young one. So this is the process of budding, while this is the process of binary fission, right? T. This is process of binary fission, binary fission in, excuse me, so binary fission in amoeba or paramecium, and this is budding in yeast. See, mother cell, this outgrowth is daughter cell, and after it get matured, it automatically get
detached and live its own life. So this is budding in yeast or hydra, right? Now, in plants, the unit of vegetative propagation, such as runners, rhizome, suckers, tubers, offset, bulb, are all capable to give rise to new offspring. These structures are called vegetative propagules. Okay, जो हम लोग आलू में देखते हैं वहां से जड़ निकल जाता है। अगर आप जिंजर का एग्जाम्पल लोगे उसमें भी आपको जड़ें दिखती होंगी। इसके अलावा अगर एक पत्ता आता है ब्रायोफाइलम नाम का, अगर आप उसको ले ले तो ये सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। ठीक है, तो इन सारी चीजों से क्या होता है, प्लांट में रीग्रोथ होता है, प्लांट वापस से जन्म ले सकते हैं, प्लांट का रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। सो बेसिकली these type of methods are called vegetative propagules, right? Now, the nodes present in the modified stem of these plants, when the nodes come in contact with damp soil or water, they produce root and new plants. So you have to make this understand that these runner, rhizome, sucker, tuber, etc., when come in contact with damp soil or water, it produces its root and then the new plant. Similarly, adventitious bud arise from the notches present at the margin of leaves like bryophyllum, as I told you just now. See, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आलू में से जड़ें निकले रहते हैं, जिंजर्स में से होते हैं, है ना। और फिर दिस इज द bulbil of awake, then leaves of bryophyllum, then water hyacinth. ये पानी में उगते हैं बेसिकली, जिसमें पानी में आएंगे वो पूरा पानी ग्रीन हो जाता है। Now, sexual reproduction. It involves the formation of male and female gametes, right? Either by same individual or by different one of opposite sex. Now, why in same individual? See, sexual reproduction occurs in plants as well as in animals. So, in case of plant, it might found in a single tree where both the male and female gametes are present in one single tree, right? But in case of animal, in case of human as well, the gametes are definitely going to found in two different individual. Like in male individual, the male gamete will going to found, and the female one, the female gamete is going to be there. So these gamete fuses to form the zygote, which develops to form a new organism. Okay, it is an elaborate, complex, and slow process. Yes, it is a very slow process because it always takes time more than asexual reproduction. Okay, so there are basically three phases in one's life in case of human, plant, or animal. The first phase is called juvenile phase. In this juvenile phase, if it is in case of plant, it will known as vegetative phase. Okay, so the period from the period of sorry the period of growth is called जुवेनाइल फेज। बेसिकली यहाँ पे ग्रोथ होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम बच्चे रहते हैं, बच्चे से हम बड़े होते हैं, हमारा ग्रोथ होता है। द फेज इज वेरिएबल टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब ये हर एक ऑर्गेनिज्म, ट्री का अलग होता है, एनिमल का अलग होता है, ह्यूमन का अलग होता है, तो ये वेरी करता है। ठीक है, so now second is
रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, जब हम छोटे थे, छोटे से हमने हमारा ग्रोथ हुआ, देन हम रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर गए, जहां अब ह्यूमन के केस में फिजिकल डिफरेंसेस का पता चलता है। ठीक है, फिजिकल जो डिफरेंसेस आता है हम देख के कह सकते हैं हु इज मेल एंड हु इज फीमेल। ठीक है, और इन टर्म ऑफ प्लांट हम कैसे जान सकते हैं कि प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है, वो फ्लावरिंग स्टेज में आ जाते हैं। ठीक है, उनमें फूल उगने लगते हैं। और आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज सेनेसन फेज कम्स। अब सेनेसन फेज में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव में हमने क्या किया, सबसे पहले जुवेनाइल में हम बड़े हुए, रिप्रोडक्टिव में हम केपेबल हुए और हमने काफी रिप्रोड्यूस किया, एंड देन सेनेसन फेज में क्या होता है, सेनेसन फेज में ये सारा कुछ खत्म हो जाता है, वो डेथ की तरफ जाते हैं, वो बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, डिपेंड करता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर प्लांट के बारे में बात करते हैं तो जनरली वो सूख जाता है या मर जाता है, और अगर हम ह्यूमन की बात करें तो बुढ़ापा आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह का प्रोसेस चलता है। अब क्या होता है, देखिए प्लांट के केस में अगर तो एनुअल और बाइनियल टाइप के प्लांट्स हैं, साल में एक बार एक ही सीजन में फ्रूट देते हैं, लाइक जैक फ्रूट आप देख सकते हैं, वो अपने टाइम पर ही आता है। मतलब जितने भी फ्रूट्स या वेजिटेबल होते हैं जो अपने सीजन में आते हैं वो एनुअल में आते हैं। बाइनियल में जो साल में 2 बार 3 बार हम उसको मतलब वो रीगेन कर सकते हैं, या फिर वैसे कोई फ्रूट्स जो हम आमतौर पे बनाना अगर आप देखें तो बनाना तो मिल ही जाता है लगभग हर सीजन में, तो बाइनियल टाइप में आ जाते हैं। या ऐसे ही कोई और सब्जी, आलू कह सकते हैं, या कुछ भी जो हमें साल में दोबारा भी मिल जाता है, तो ये बाइनियल में आते हैं। अब आता है पेरेनियल में, लेकिन पेरेनियल से पहले बाइनियल और एनुअल में क्या होता है कि वेजिटेटिव फेज जो होता है और जुवेनाइल फेज जो होता है, ये और सेनेसन फेज भी, ये तीनों फेजेस काफी क्लियरली हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फिर आता है पेरेनियल फेज। अब पेरेनियल फेज में क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसन फेज को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पेरेनियल में क्या आता है, आप एग्जांपल ले सकते हैं बैम्बू का। ठीक है, बैम्बू के स्पीशीज का, जो 50 से 100 साल सिर्फ लेते हैं बड़े होने में, उनको ग्रो और मेच्योर होने में 50 से 100 साल लगता है। फिर वो अचानक से एक लार्ज क्वांटिटी में फ्रूट बेयर करते हैं, एंड देन वो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इट डाइड। सो इसमें हमें क्या जानने को मिला कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेजेस होता है वो 3 होता है। जुवेनाइल जब हम बड़े होते हैं, रिप्रोडक्टिव जब हम रिप्रोड्यूस करने में केपेबल भी होते हैं और रिप्रोड्यूस करते भी हैं, देन सेनेसिस जब हम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, एनिमल के केस में वो बूढ़े हो जाते हैं और ट्री के केस में उनकी डेथ हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज another plant called Strobilanthes courthiana, also known as Neela kuranji, flower only once in a 12 years. 12 साल में एक ही बार इसके ये अपना रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। Now, different type of cycle that undergoes in humans and animals. Excuse me. So, डिफरेंट टाइप्स में क्या क्या आता है, पहला ऑस्ट्रस और दूसरा मेंस्ट्रुअल। ठीक है, सो ऑस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, ये सबसे पहले तो नॉन प्रीमेट्स में आते हैं। ठीक है, नॉन प्रीमेट्स कौन होते हैं, नॉन प्रीमेट्स एनिमल्स और मैमल्स लाइक dog, cat, cow, sheep, etc. undergoes some kind of cyclic changes during the reproductive phase. अब इनमें क्या क्या साइक्लिक चेंजेस आती हैं, आइए जानते हैं। इंडोमेट्रियम रीएब्सॉर्ब इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। सो ऑस्ट्रस साइकिल में बेसिकली जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि इनका जो मतलब पीरियोडिक साइकिल होता है, ये जो ब्लड है वो डिस्चार्ज होने की जगह रीएब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम इनका रीएब्सॉर्ब हो जाता है। सेक्सुअल एक्टिविटी अकर्स
ओनली ड्यूरिंग टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के टाइम पर ही इनमें सेक्सुअल एक्टिविटी पाई जाती है। नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होते हैं, लाइक ह्यूमन, मोंकी, एप्स। ओके, इसमें क्या होता है, इंडोमेट्रियम शेड ऑफ, जो ब्लड होता है दैट ऑलवेज शेड ऑफ इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द साइकिल। वो कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी को वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हैं। नाउ, difference between seasonal breeders and continuous breeders. Many animals, especially those who are living in natural wild condition, exhibit such cycle seasonal breeding में। Favorable सीजन में ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो भी एनिमल फेवरेबल सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं उनको सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग, लिजार्ड एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड, जो भी मैमल्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं पूरे जीवन काल में कभी भी, जब तक उनका रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है, ठीक है, तो उनको कंटिन्यूस ब्रीडर्स के श्रेणी में लाया जाता है। they always comes in continuous breeders. Okay, so इसके एग्जांपल क्या होंगे, cattle, apes, rabbit, in fact the humans as well। ठीक है, हम भी continuous breeders में आते हैं, और seasonal breeders में dog भी आ सकते हैं, lizard, frog etc. With this, I finished my first part, and I hope that you all will, get the knowledge and loved my video. And yes, if you really like my video and you are new to my channel, please don't forget to subscribe my channel and hit that bell icon so that you will get all the notifications of my new video. And yes, thank you so much for being with me. Thank you so much for listening. Keep loving MB classes. Thank you.